Good afternoon, everyone. I am Sakshi Rana from IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today, my topic is Programmable Logic Controller. First of all, what is PLC? PLC, or we can say what is the Programming Logic Controller. In this, what we have studied, that is these are the contents. What is PLC? And second is history of PLC, major components of PLC, operational sequence of PLC, ladder logic, example of starting and stopping of motor. This is the example how can be programming in the PLC, and disadvantages and the application. Right. First is what is PLC. Before we going ahead, firstly we have to know what is PLC. PLC basically होता क्या है? PLC is a digital computer. As you know, सिंपल जो हमारे कंप्यूटर होते हैं ऐसा ही आपका एक पीएलसी भी एक कंप्यूटर होता है, दैट इज अ डिजिटल कंप्यूटर. In this, we have designed multiple inputs and outputs arrangement, extend temperature ranges, immunity to electrical noises, and resistance to vibration and impact. A PLC is an example of a real-time system. जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है, लैंग्वेजेस होती हैं. PLC is also like that, a computer. In this, we can design many machines, and it is a operating system also. And what is the history of PLC from when we have started to use the PLC? PLC was introduced in late 1960. 1960 से हम PLC का use कर रहे हैं, but that time it is used in the relay system. First commercial and successful programmable logic controller was designed and developed by Modicon as a relay replacer for General Motors. जो जनरल मोटर्स होती थी उनको रिप्लेस करने के लिए एज अ रिले फर्स्टली पीएलसी यूज किया गया था. आफ्टर दैट मॉडिफिकेशन होने के बाद 1970s में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड आपका पीएलसी आया. आफ्टर दैट पीएलसी में मॉडिफिकेशन और एक्स्ट्रा वर्जनिंग का अपग्रेड होता जा रहा है. नेक्स्ट इज earlier it was a machine with thousands of electronic parts. Relay is a complicated part, or you can say there's a many complication connections in that. After that, PLC is a very small device, you can say. Later in 1970, the microprocessor became reality and greatly enhanced the role of PLC, permitting it to evolve from simply relay to the sophisticated system as it is today. So after the 1970, microprocessor being used, and it is a simple programming. Like in the microprocessor, we can program in a assembly language, and like in the computer or C programming, Java, and .NET. These are the C programming. That's these types of the PLC programming are. This is the block diagram of PLC. How can PLC is used? PLC is like a कंप्यूटर. जैसे कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर में भी आपका क्या होता है, दैट इज अ इनपुट मॉड्यूल. एक इनपुट मॉड्यूल होता है. इनपुट मॉड्यूल यू कैन से व्हाट आर द इनपुट मॉड्यूल्स. विद द हेल्प ऑफ वी कैन प्रोवाइड द इनपुट टू एनी सिस्टम. It may be sensor, push button, contact, limit switches, etc. Like in computer, what are the input modules? Like आपका keyboard होता है. Keyboard is also a input module, and CPU is like a processor. For power supply, output module, programming device. These major components are like the computer. जैसे आपके कंप्यूटर में आपके सारी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट मॉड्यूल होता है, आउटपुट मॉड्यूल लाइक आपका मॉनिटर होता है. ऐसे ही आपका पीएलसी में भी आपका जो आउटपुट मॉड्यूल होगा दैट इज द मॉनिटर. आउटपुट डिवाइसेस होती हैं लाइक आपका अलार्म होगा, आपका कहीं पे हमने सिस्टम लगाया है, वहां पे आपका क्या होता है, आपको इन सब का यूज करके आपको बेसिकली आउटपुट मिलता है. एंड द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यू कैन से दैट इज द पावर सप्लाई, बिकॉज विदाउट द पावर सप्लाई एनी सिस्टम कांट ऑपरेट. अगर पावर सप्लाई नहीं होगी तो आपका जो पीएलसी होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, वो भी आपकी वर्किंग कंडीशन में नहीं आता. प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वी कैन प्रोग्राम. लाइक आपका जैसे आपका एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, लाइक इन द माइक्रो प्रोसेसर देयर इज अ प्रोग्रामिंग डिवाइस. विद द हेल्प ऑफ वी कैन डू प्रोग्रामिंग इन द असेंबली लैंग्वेज. लाइक if we have to add two digits, then how can we add? Directly we can't add, but with the help of language or assembly language, or with the help of instructions, we can add the programs. We can add the digits, and with the help of programming device, we can put the program into the processor, or we can burn the program into the processor. Like processor is the mind of the computer, or you can say the mind of PLC, because all the processing held in the processor.
Without the processor, it can't be possible that we can burn the program, and if we are providing the input, then we can get output. That is not possible. So this is the major component of common PLC. It is the basic diagram of the PLC. And what will be the output of the PLC? It can be a alarm, it can be a fire alarm also, it can be a parking alarm also, it can be anything. Like now we have studied about the major components of a common PLC. What are the major components? Now we have discussed that are the power supply. Power supply provide the voltage needed to run the primary PLC components. Like power supply is the necessary thing, or necessary voltage with the help of we can run the primary PLC component or any other the component. Without the PLC or without the power supply, it is not possible. Next is the input output module. Input output module provides signal conversion and isolation between the internal logic level signal inside the PLC and the field's high level signal. With the help of input output module, we can provide the input signal and we can get the output signal. If there is not input output module connected, then we can't get the signal like in the input and to the output also. Next is the processor. What is the processor? As we can know with this name, that is the processor which can process. Process means कोई भी program आपका processing हुआ, that is the processor. Provides intelligence to command and govern the activities of the entire PLC system. Processor क्या होता है? Which process? Like we can take the daily use example. If we have to do any work, but we can write. But what we have to write? There is a person in our mind. That is the processor. तो हमारा processor क्या होता है? That is our mind. ऐसे ही आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर, दैट इज द सीपीयू. ऐसे ही आपका पीएलसी का भी प्रोसेसर होता है, जिसमें आपकी सारी प्रोग्रामिंग, जो भी आपको प्रोग्राम उसमें बर्न करना होता है, वो सारी प्रोग्रामिंग आपकी प्रोसेसर की हेल्प से आउटपुट मॉड्यूल पे जाती है. बट विद द हेल्प ऑफ power supply, programming device, these are the necessary component. We can't imagine or we can't say it is possible without any one component. Next is the programming device. Programming device is also an important part, because without the programming device, we can't enter or we can't burn the program in the system. Programming device used to enter the desired program that will determine the sequence of operation and control of process, equipment or driven machine. क्या होता है प्रोग्रामिंग डिवाइस? कोई भी प्रोग्राम, जो भी हमें प्रोग्रामिंग करनी है या जिसके लिए हम पीएलसी का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लिखनी होती है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू सेट अ अलार्म, if there is a water supply, then we have to know. So for that we have to do the programming. And if we have to parking a car, there is no any miss happening, the parking is full. So that's why these are the programming device. This type of program we can do with the help of programming device in the PLC. That is possible with the help of PLC. Without PLC, it is not possible. And in the programming logic controller, there are the input devices like आपका सेंसर होता है, और आपका आउटपुट डिवाइस, आपका कोई भी अलार्म होगा, कोई भी फायर अलार्म हो सकता है, कोई भी आपका टैप फुल होने पे जो अलार्म होता है वो अलार्म हो सकता है. जैसे जनरली आजकल हम घरों में देखते भी हैं कि अगर आपका टैंक फुल हो जाता है तो आपका आवाज आती है, टैंक इज फुल, काइंडली स्विच ऑफ द मोटर. तो वो किसकी हेल्प से होता है? दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द PLC. Next is PLC operation sequence. That is also an important part. How PLC sequence the program, how PLC operation performs, कैसे कैसे operation perform होता है. This is all have to done with the step wise. ये सारी चीजें आपके step wise होंगी. अगर आपका step wise होता है तभी आपका प्रोग्रामिंग स्मूथली रन करता है. अगर आपका step wise नहीं होगा तो आपका कोई भी प्रोग्रामिंग स्मूथली रन नहीं करेगा. स्टेप is very mandatory, you can say. अगर step wise हम कोई भी काम नहीं करते हैं, that is not so much accurate as if we have done it with the step wise, that it will be more accurate. Like first step, what is the first step? That is the self test. Self test क्या होता है? Testing of its own hardware and software for faults. Like if there is any program or if there is any fault in the hardware or as well as in software, then it will take the self test. If there will be any fault, it will blink the light, right?
उसके बाद आता है इनपुट स्कैन। व्हाट इज इनपुट स्कैन? इनपुट स्कैन जो भी हमने उसे इनपुट प्रोवाइड कराया है वो साइकिल को कंप्लीट करना स्टार्ट करेगा और इट विल बी दी सेकेंड स्टेज। Input scan, if there are no problems, PLC will copy all the input and copy their values into the memory. अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मींस अगर कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉल्ट विजिबल नहीं होता है या वो फाइंड आउट नहीं हो पाता है, नहीं होता है, पीएलसी विल कॉपी ऑल द इनपुट। जितने भी इनपुट हमने पीएलसी को प्रोवाइड कराए हैं, प्रोग्रामिंग डिवाइस को जितने भी इनपुट हमने दिए हैं, तो वो सारे कहाँ पे कॉपी हो जाएंगे? इनटू दियर मेमोरी। जब आपके जो भी वैल्यूज हैं, जो भी आपकी इनपुट्स हैं, वो मेमोरी में कॉपी होते हैं, मेमोरी तक जाते हैं, आफ्टर दैट द प्रोसेसिंग स्टार्ट, मींस द प्रोसेसर वर्क स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। लाइक नेक्स्ट इज लॉजिक सॉल्व स्कैन, मींस यूजिंग इनपुट द लैडर लॉजिक प्रोग्राम इज सॉल्व। इनपुट्स का यूज करके हम लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग सॉल्व करते हैं। जो भी आपका प्रोग्राम है वो इट में बी लैडर लॉजिक, इट में बी फंक्शनल प्रोग्राम, तो वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एंड वंस एंड आउटपुट्स आर अपडेटेड, जैसे जैसे आपका स्टेप वाइज प्रोग्राम होता जाता है वैसे वैसे आपका आउटपुट आना स्टार्ट होता है। पीएलसी वर्क्स इन अ स्टेप वाइज फॉर्म। it will not read the whole program and execute once. It will read instructions stepwise and show the output on the output screen. Output scan, while solving logic, the output values are updated only in the memory. जब भी आपकी output क्या है, output जो भी आपका लॉजिक गेट है या लॉजिक प्रॉब्लम्स हैं, लॉजिक इनपुट हैं, वो सॉल्व होना स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट द वैल्यूज स्टोर्ड इन द मेमोरी, वैल्यू मेमोरी में होना स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन लैडर स्कैन इज डन, जब आपकी जो भी लैडर प्रोग्रामिंग है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, व्हाट वी हैव टू डू, बट मेन प्रोग्राम इज द लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। जब आपकी प्रोग्रामिंग स्टोर होनी स्टार्ट हो जाएगी या जो भी आपकी आउटपुट है दैट विल बी स्टोर इन द मेमोरी, आफ्टर दैट द आउटपुट विल गो टू द output section, or we can say the output module. The output will be updated using temporary value in the memory that will be stored in the temporary basis, but finally we get the output on the output module. Next is the we have studied right now, that is the ladder logic programming. What is the ladder logic programming? There are every machine, we can say everyone has a specific programming, specific language. Like in the computer we used C language, C++, Java, XYZ, and in the microprocessor we have to use the assembly language, and in the microcontroller we use the embedded language. That's this such in the PLC we are using these for the four main programming language, that are the ladder logic, functional block diagram, sequential functional chart, Boolean mnemonics. But in these four languages, for programming languages, the most important language, that is the ladder logic language. What is the ladder logic? Why it is named as the ladder logic programming? This is the ladder logic. Ladder logic is the oldest programming language for PLC. लैडर लॉजिक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पीएलसी में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबसे पुरानी लैंग्वेज है, दैट इज द ओल्डेस्ट। इट इज वेल सुटेड टू एक्सप्रेस कॉम्बिनेशनल लॉजिक। ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक के लिए बेस्ट लैंग्वेज होती है। द मेन लैडर लॉजिक सिंबल रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। अब लैडर लॉजिक हम जो भी बनाते हैं, लैडर डायग्राम हम जो भी बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या यूज करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू यूज। लाइक दीज आर द सम सिंबल्स which are used in the ladder logic, that are the make contact. If this symbol is used, then it means the make contact. Like here we are used A, B, Y. This symbol, yani this symbol is used for the make contact, break contact. If there is two parallel lines and here's an inclined line, that means it is a break contact. And if there is a circle with the two points, that is the relay coil or relay contact. These are the ladder logic programming or ladder logic contact, you can say. In the ladder logic, we have to draw a ladder diagram. Why it is named as a ladder logic? Because in this, the program is, or in this, the diagram is shown in the form of the ladder. Like you can say, ladder. These are the two vertical lines, and on the horizontal line, there are some connections that are that forms in the ladder form. That's why it is known as the ladder logic diagram. Now, ladder logic for basic gates. Like in the digital, we are use some gates like AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate. These
these all are get used in the ladder logic also, or you can say in the PLC also. In the AND gate, what is the table of AND gate? That is the 0 0 0 0 1 0. If there is a one input is on, then the output will be off. But if in any condition the two inputs, if there is a two switches on, the output should be on, right? And this, if A and B, in the last slide we have seen, this is the symbol of the make content, means it is the on switch, means A is on, B is on, then Y is the output. Yeah, we can say that is the logic, then output will be on. So output, if there is a diagram, there is a ladder diagram of any system or of any switches of any motor, you can say, then if A is on, B is on, then the motor will motor will run. If in this system, if in this ladder logic diagram, if any switches will be off, then the output will be off. Like if A will be off, then B will be on, then the output will be get off condition, means motor will not start. But if A is on, B is off, then also motor will not start. And if there is both switches will be in on condition, then the motor will start. But in the OR gate or in the OR gate table, the logic function is opposite to the AND gate. If there will be one switch is on, then the output will get, it means 0 0 and 0 0 1. If there is any switch will be in on condition, then it will start the motor. Like A, B, and Y. A is a switch and B is another switch, and B